Hello students, a very good morning to all of you. Today we are solving our exercise 10.6 from our notebook page number 136. So what the first question number is saying, question number 1 is saying that write down the duration of the time from. We need to find it out the time duration. What is the time duration? Time duration हम किसे कहते हैं? किसी भी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसे हम टाइम ड्यूरेशन कहते हैं. ओके, मान लीजिए आप बाजार गए, आप यू गो टू मार्केट टू बाय समथिंग. लेट इफ यू गो एट 12 o'clock in a noon and you come back by 3 o'clock in an afternoon. So what time you had took? What the time duration you had took to come back to your house? So it will take 3 hours, correct? So that the time duration here we need to find it out. Now what the question number 1 is saying that write the duration of time. So our A question is saying that 5:30 a.m. to 7:30 a.m. मीन्स मान लीजिए आप कोई सपोज कीजिए आप मॉर्निंग में सुबह 5:30 उठ के पढ़ाई कर रहे हैं अप टू दी 7:30 तक. सो हाउ मच टाइम ड्यूरेशन यू हैड स्टडीड. सो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा मैक्सिमम टाइम यहाँ क्या है 7, यानी हमारा वर्क जो है कंप्लीट कहाँ हो रहा है, इस टाइम पे आके हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो रहा है. तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो क्या है, ये वाला टाइम है, ये है हमारा मिनिमम टाइम. तो हम मैक्सिमम में से क्या करेंगे, मिनिमम टाइम को माइनस कर देंगे. वी विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू बाय आवर मिनिमम टाइम. ओके, सो राइटिंग हियर hour, hour and minutes portion and do the subtraction. What is our maximum value is 7 and 30. Here is another 5 and 30. Now we need to the subtraction. Okay, so 0 में से 0 subtract करेंगे 0, 3 out of 3 it will be 0, 7 out of 5 we will get 2. So our answer is here 2 hours. We have studied for 2 hours. Okay, let me do its if I say it's D part. Okay, it's D part. 11 o'clock and 10 a.m. to 1 o'clock 30 p.m. Okay, तो अब आपको कितना टाइम लगा इसके अंदर. फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू एन आवर 24 hours time period. Okay, so we can write this is in pm. pm means afternoon, in an afternoon. तो आफ्टरनून में हमें we already learned that कि 12 नून होने के बाद में जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1 o'clock होती है, जो आफ्टरनून की 1 o'clock होती है, उसे हम क्या लिखते हैं, व्हाट विल राइट दैट इज 13 आवर्स. जो 2 o'clock होती है आफ्टरनून में उसे हम क्या लिखते हैं 14 आवर्स. जो 3 o'clock होती है आफ्टरनून में उसे हम क्या लिखते हैं 15 आवर्स. ओके, सो इसी तरीके से जो ये 1 hour हुआ है पीएम यानी आफ्टरनून में, दैट विल बी दी 13 hours 30 minutes. सो विल राइट दिस 10 a.m. to 13 hours and 30 minutes. Okay, so now we will do the subtraction from this to this. So writing it here hour and minutes, it will be hour is our 13 and minutes is our 30. Hour is our 11 and minutes is our 10. So on subtracting we get 0 out of 0, 3 out of 1 if we subtract it will be 20, 3 out of 1 it will be 2 and 1 out of 1 it will be 0. So it takes 2 hours and 20 minutes. Okay, so our answer is 2 hours 20 minutes. This time is to be we have studied. Okay, now
So do its let us me do its h part. Let me do its h part, that is 06, 30 or to 11:30 hours. We need to subtract 11:30 hours means क्या 1130 hours होते हैं? कभी नहीं होते हैं. That is an 11 hours. Sorry, if we can write like this, hours and minutes. So 11 first two digits is representing the hours and next two digits represents the minutes. जो पहले दो डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें आवर्स को, जो बाद के दो डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मिनट्स को. ओके, सो 11 आवर 30 मिनट्स. फर्स्ट इज 06, so 06 hours 30 minutes. Okay, here we need to the subtraction. So what will be? It will be 0 out of 0, 3 out of 0. Then what is at here? It will be 0, it will be 1, 11. Out of 11 if we subtract is 6, we will get here 5. So here is in our 5 hours. 5 hour is in our answer. Okay, so do its remaining part into your notebook. Okay, now doing its second question. Seema went to for shopping at 10:30 a.m. Okay, so we'll write here Seema went on 10:30 a.m. ठीक है. She returned home. She returned at she returned after 3 hours. So what will be the time when she returned? So जब वो वापस आती घर पे उस समय कितना टाइम हो जाता है. सो हमें यहाँ पे क्या टाइम गिवन है कि इतने बजे वो घर से निकली थी. सो वी विल राइट हियर आवर्स एंड हियर वी विल राइट आवर मिनट्स. कितने बजे निकली थी? 10 hours 30 minutes. सो इट विल बी 10 hours and 30 minutes. अब उसे टाइम कितना लगा वापस घर आने में? 3 hours लगा. 3 hours, तो हमें ये 3 hours जो है वो आवर्स वाले पोर्शन में ऐड करना है. सो इट विल राइट एट 3 मिनट पोर्शन में इसमें कुछ दे रखा नहीं दे रखा तो आप 0 लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ 0 + 0, so 3, it will be 3, it will be 10. So this makes an 13 hours 30 minutes on this time that the Seema returned back to home. Seema came back to home. Okay, or we can write this time as in the form of 1 hour 30 minutes. Sorry, we can write this in the form of 1:30 p.m. ओके, 1:30 p.m. तो p.m. मीन्स क्या होता है? आफ्टर द नून. आफ्टर नून को जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है? हमारा p.m. में कहलाता है. एंड वी कैन राइट दिस इन द अवर दिस फॉर्मेट आल्सो. ओके, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. नाउ our third part of this question is Rehan is in a school for 9 a.m. to 1:30 p.m. How much time does it she spend in school? So हम यहाँ लिख सकते हैं रेहान went to school on 9 a.m. and Rehan
return from school at 1:30 p.m. So we can write this 1 o'clock and 30 p.m. into the form of our 24 hours to 13 hours and 30 p.m. Okay, so now what the time that he spent in a school? So the time he spent in school, that is 30 hours and 30 मिनट्स में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 1 आवर 30 मिनट्स को. So 0 0 0 2 and 1, so it takes 12 hours. So it take 12 hours he stay in school. This is our answer. Okay, so do this complete exercise into your notebook. Okay, do complete exercise in your notebook. Thank you.